Good evening, students. Basing on the previous concept, let us solve some of the questions. A simple question is, there are two objects, A and B, like this. One is placed above the other. This is the question. Let's say this is A and this is B. Out of these two, one is placed above the other. B is having a charge Q and whose mass is M. Here the question is, what should be the sign and magnitude of charge on A? What should be the sign and magnitude of charge of A so that B will be stationary means it is suspended freely, there is no support, so that what should be the charge on A so that B will remain stationary. The simple concept, let us solve it. Here it is asked to calculate the magnitude. Actually the charge Q must be having some magnitude, whatever it may be, whatever be its value. So that is separate thing. We will just calculate how we will calculate the value of the charge on A. Let's say it is Q dash. Here you have to see which object is asked to remain stationary. को ऑब्जेक्ट स्टेशनरी रही बोली पचारे देख से कहूँ बी विल बी स्टेशनरी. अच्छा ये अच्छी गोटे चार्ज ये अच्छी ऊपर मुझे गोटे चार्ज रखिली बी. अच्छा ये लेट्स से इट इज हियर बी टा ये रेस्ट रे रहिबो. रेस्ट माने रेस्ट मीन्स देयर विल बी नो नेट फोर्स मीन्स नेट फोर्स ऑन बी इज 0. अच्छा देखो जेतु मु ताकू ए रे रखिछि इट मीन्स ता ऊपर गोटे ग्रेविटेशनल फोर्स पडुथिबो. सो ऑन बी फोर्स ऑफ ग्रेविटी व्हिच इज नथिंग बट mg इज एक्टिंग ऑन बी. अच्छा जदि खाली ग्रेविटी फोर्स पडला तो बी तळु पडे आसीबो और स्टेशनरी रहिबोनी. सेति पई ये रेस्ट रहबा पई हेले ताकू ऑपोजिट डायरेक्शन रे गोटे फोर्स पडन दरकार दैट इज f व्हिच मस्ट बैलेंस दिस वेट. अच्छा ये जो फोर्स टा पडुथिबो एटा को वेराइटी रो फोर्स ग्रेविटी तो केबे ऊपर को अट्रैक्ट माने ऊपर को एक्ट कर परिबनी. लाइक सपोज ए बी भीतर गोटे ग्रेविटेशनल फोर्स दैट इज अट्रैक्टिव. ताहले एटी हम भाबिया को पड़िबो डेफिनेटली जदि यार चार्ज होची q ताले या को किछि जदि हमें चार्ज दे दबा आउ ए बी ऊपर मन रखो फोर्स ऑन बी बाय ए तार डायरेक्शन ए एफ होबा दरकार जोटा कि ऊपर डायरेक्शन को रहिबा दरकार. अदरवाइज कोन हो ना ऊपर नेट फोर्स ता 0 होबो नाही. ताला में ए सिंपल लॉजिक या ऊपर नेट फोर्स 0 हो पाई हले mg को बा b रो वेट को ता ऊपर थिबा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जे कि a पकोची कैंसिल होबा दरकार. सो fba must be mg. So which is what here it is fba is electrostatic force on B by A. अच्छा ये देखो यार साइन दिया जाएगी Q रो साइन भी दिया जाएगी. Suppose let's say Q is negative. Q is negative. I mean last class पढ़ते Coulomb's law in vector form. If it is negative, let's say I don't know what is the sign of this charge A. Someone can take
A to be positive, someone can take A to be negative. Let us test. If A ta positive hela, if A positive hela, if A will be positive, B कौन अच्छी negative. अच्छा positive negative को attract करियो, तामाने A कौन करियो. Let's say it is B, it is A कौन करियो, B को निजे आड़े टानियो. So if B A direction will be downward, किंतु हमारा को direction दरकार upward. सेति पाई ताले A टा positive हबनी, ताले हबा कौन negative. ताले sign बारी हला, तेरा sign हबा negative. A equation रे हम यदि value पके दबा, we will get the value of Q. केमती देखो mg must be FBA. The magnitude of FBA, the magnitude of FBA is Coulomb's law पकेले कौन आसियो ना suppose ए माने AR रे अछंती, so that तांको भितर force हला 1/4 pi epsilon naught into दुई जनकर charge हला Q आ जनकर Q dash. and center to center भितर distance जो अछि बादिरो charge भितर distance हला r, so it should be r square. FBA is this much. It is actually what the magnitude of this force. एटा को एटी पके दो आंसर आसीला देखो. So which implies if we put it here, the value will be 1/4 pi epsilon naught q dash by r square, which is equal to mg. Now you can find your value q dash. So which implies q dash is equal to देखो कौन होगा 4 pi epsilon naught into r square into mg whole divided by q. This is your answer. जहाँ value सब दे थी वो यार value पकेबो 4 pi epsilon रो value पकेबो r whatever distance will be given पकेबो mass कहाँ रो mass ना it is mass of b. ये जो टर्म में नहीं चे mass, this m is the mass of b. कहीं now B ऊपर थिबा gravitational force को electrostatic force of A balancing here. ताले इटा आंसर मन रखता ये ला गोटे variety question.